Okay dears, one more topic with income and expenditure, that is known as saving function. In previous video I discussed consumption function, saving function. Saving is function of income. What does it mean? It means as income increases, saving will also increase. In my previous lecture I told the relation between income and consumption. As income increases, consumption also increases, but not at same rate. I told जो हमारी सेविंग है वो इनकम से ही आएगी. इनकम का कुछ पार्ट कंज्यूम हो जाता है और बचा हुआ पैसा सेविंग में चला जाता है. तो एज इनकम इंक्रीजेस, कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस एज वेल एज सेविंग ऑल्सो इंक्रीजेस. दैट्स व्हाई सेविंग इज फंक्शन ऑफ इनकम, व्हिच सेज दैट एज इनकम इंक्रीजेस, सेविंग ऑल्सो इंक्रीजेस. This is the previous table I have used. Income the same level 0, 20, 40, 60, 80, 100. Now the consumption 20, 30, 40, 50, 60, 70. Now let us prepare a column of S, saving. Saving is income minus consumption, Y minus C. Here income is 0, consumption is 20. So by saving is minus 20, negative saving. Income is 20, consumption is 30. It means my saving is minus saving, minus 10. Here income is 40, consumption is 40, saving is 0. 60 minus 50, saving is 10. 80 minus 60, saving is 20, and so on. Now let us show it with the help of this diagram. This is x-axis, dear friends. This is y-axis. Here income, here saving. Now if you see, here saving starts from negative reason because of this autonomous consumption. जो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जीरो लेवल पे भी कंजम्पशन होता है, तो इनिशियल स्टेज पे हमारी सेविंग माइनस में होती है. दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड सेविंग फ्रॉम दिस नेगेटिव जोन. ये हमारी सेविंग नेगेटिव है. यहाँ पर हमारी इनकम और सेविंग इक्वल हो जाती हैं. तो ये हमारा माइनस एस का पोर्शन है, नेगेटिव सेविंग, और ये प्लस एस, ये पॉजिटिव सेविंग है. तो इस प्रकार से हम ये सेविंग का डायग्राम ड्रॉ करते हैं. नाउ रिलेटेड टू इट वन मोर टॉपिक इज देयर, प्रोपेनिसिटी टू सेव. व्हाट इज आवर इंटेंसिटी टू सेव आउट ऑफ आवर इनकम. हमारी टोटल इनकम में से हमारी सेविंग की प्रवृत्ति क्या है, हाउ मच वी वांट टू सेव, दैट इज नोन एज प्रोपेनिसिटी टू सेव. How much saving a person want out of his income. अपनी इनकम में से वो कितनी सेविंग करना चाहता है. It has two things sir. Number one, APS, average propensity to save. What does it mean? It means it is the ratio of saving and income. Ratio of saving and income. That is APS is equal to S upon Y, saving upon income, and marginal propensity to not consume dear, marginal propensity to save, MPS, ratio of change in saving due to change in income. Amperes, that is delta S upon delta Y. Delta S upon delta Y. Change in saving due to change in income. This topic is related with propensity to save. With the help of this table also, these two columns can be drawn. One is APS, S upon Y. S is minus 20, Y is 0, infinite, minus 10 upon 20, minus 0.5, 0 upon 40, 0, 10 upon 60, find the figure, 20 upon 80, 30 upon 100. So this is how to calculate APS. And then MPS, delta S upon delta I, change in saving due to change in income. So in this way you have to prepare this column also. So this was the topic, saving function.
Now one more small thing I will tell in this lecture. In previous video I told consumption function, and after consumption function I explained APS and APC and MPC. Both these topics are related with propensity to consume. Propensity to consume. I forgot to tell about this particular topic. मैंने कंजम्पशन फंक्शन के डायरेक्ट बाद एपीसी और एमपीसी सिखा दिया था. ये एपीसी और एमपीसी किसका पार्ट है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मींस व्हाट इज माय इंटेंसिटी टू स्पेंड आउट ऑफ माय इनकम. मेरी जो टोटल इनकम है उसमें से मैं कितना पैसा खर्च करना चाहता हूँ. व्हाट इज द रेडीनेस टू स्पेंड. That is known as propensity to consume. And in propensity to consume, I told in my previous video APC, average propensity to consume, and marginal propensity to consume. Thank you very much for this topic.